Hey guys, how are you guys doing? I think this is the most exciting day of my life. I think this is the most exciting video I've ever filmed. I have a major life update और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ. Um, I've been, by the way, before I announce my big announcement, I have to say, if you don't follow me on Instagram, you totally should, क्योंकि वहाँ मैं हर हफ्ते I do a get ready with me where I just talk to you guys. I give life updates. और पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से I've been hinting that I have a major life update and people have all kinds of guesses. और जब भी कोई औरत ऐसी बात करती है तो नंबर वन गेस तो यही होता है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज लाइक नो आई प्रॉमिस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. We just bought a brand new house here in Pakistan. How exciting! I cannot believe I just said that out loud to a camera. I cannot believe it. Even though आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं 3-4 हफ्ते तक ये वीडियो शेयर करूँगी. I don't think I'll share anything up until right before we're ready to move. Because पिछले 4-5 महीनों ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो यही सिखाया कि things can go downhill एनी टाइम. एंड पिछले 4-5 महीने मेरी लाइफ में देव बिन अ रोलर कोस्टर. बाय द वे आई नीड टू स्टार्ट डूइंग माई हेयर. मैं बाल अपने करने मुझे स्ट्रेट क्योंकि आई हैव टू फिल्म अ कपल ऑफ वीडियोज़, अ कपल ऑफ मेकअप मिनट्स. वो भी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, वो मैं ऐसे यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ. लेकिन आई डू शेयर अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम, सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज फॉलो मी देयर. बट I need to give you guys a little backstory and this entire series. I'm gonna do an entire series as much as I can. इसलिए क्योंकि we all know I'm terrible with vlogs. और स्पेशली घर से निकल के या अपने घर से बाहर कहीं जाके अपने घर में भी इवन होते हुए I cannot vlog like a normal person does. लेकिन उसके बावजूद I will try my best to document as much of it as I possibly can, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ document नहीं किया and this has been in the works for, like I said, at least 4 months I think. And we have seen dozens of houses. हमने इतनी house hunting की है कि मैं आपको लाहौर के सारे इलाकों में क्या प्राइस रेंजेस हैं और किस तरह के घर हैं, I can tell you everything. बट मैंने उस सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं किया बिकॉज इट वॉज जस्ट टू मच और बहुत ख्वारी वाला काम था वो सारा का सारा. बट राइट नाउ दिस इज़ वेयर द एक्साइटिंग पार्ट स्टार्ट्स. आज हमारे घर का बयाना हो गया. ओ माई गॉड, आई कैन नॉट बिलीव आई एम सेइंग दैट आउट लाउड. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर का जनाब बयाना हो गया एंड द फुल पेमेंट हैज़ टू बी मेड बाय July 10th. So I think if all goes well, inshallah, in the beginning of July, I will announce. Right when we are about to move, because you never know, things can go in either direction at any time, and I hope ke aisa kuch na ho and that I'm able to share it on the right time. But chakkar ye hai कि for those of you who have been following me for a while, you guys know कि मैं जनाब चाइना होती थी up until January of last year with my husband who used to work there at a university. He's still working there, लेकिन कोरोना की वजह से we have not been able to go back and he has been working online. लेकिन so हमारा पाकिस्तान में कोई घर नहीं था अपना. एंड शुरू के जो 8 महीने थे वो वी वर लिविंग सेपरेटली. मैं और मेरी बेटी रह रहे थे with my parents and he and his mother were living with his sister. So it wasn't nowhere near an ideal situation. It was not good for our family, for our 6-month-old daughter at that time. और उसने 7 months इस तरह से गुजारे कि she only used to see her father at weekends. और फिर we moved into this house जो कि हमारे relatives का है. ये लोग बाहर रहते हैं and they very graciously offered this house to us. ये fully furnished house था. So हमारे लिए बहुत suitable situation थी कि हम इधर move कर गए. लेकिन obviously अब we have absolutely no idea what is going to happen. Is my husband's job going to continue? Are we going back to China? Are we going to stay here? Is he going to find a job in Lahore या किसी और शहर में? We have no idea.
एंड सो लाइक इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, एंड आप किसी के घर में कितना अर्सा एज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन रह सकते हो, राइट? सो देर हैड टू बी like there was a point where we were like we have to make a decision and we have to make like a change and we need a base in Pakistan. अभी मैं कही थी कि अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं, जॉब कहाँ लगे मेरे हस्बैंड की, क्या हम वापस चाइना चले जाएँ. सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि then it's a really odd time to buy a house, but for us, like we need a base in Pakistan, we need a place in Pakistan that we can call home. And चाहे like let's say हम वापस चाइना चले जाते हैं, if we ever come back to Pakistan, मेरे पेरेंट्स के घर जाना या मेरे हस्बैंड का उनके रिलेटिव्स के घर जाना would be a choice, it wouldn't be a मजबूरी. and that's such a difference. आप दोनों माइंडसेट्स को अगर कंपेयर करो तो इट्स सच अ डिफरेंस टू फील कि हम किसी के घर मजबूरी से आए हैं या हम किसी के घर अपने शौक़ से, अपनी चॉइस से आए हैं. इट्स जस्ट very different the way you feel about these two things. And so we were like we need a house, it can be small. हमें apartment living की आदत है चाइना में, and we like small houses. I think they're easier to manage, and we wanted something very small but something that was ours. And so पिछले 3-4 महीने से I've barely spent any time at home at all. Every weekend, every like day my husband had off, we've been आउट एंड अबाउट हाउस हंटिंग, और घर देख रहे हैं जी, एजेंट से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. दिस इज जस्ट बिन सो मच गोइंग इन द बैकग्राउंड एंड दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू शेयर, एंड आई हैव वांटेड टू, आई रियली वांटेड टू, बट आई वाज लाइक कि ये ऐसी चीज़ है कि ऑब्वियसली इफ़ इट डजंट लाइक वर्क आउट द वे वी वांटेड टू, तो खामखा आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड लाइक it's just not nice to have like that kind of plan put out in the open and then have like so many people ask you questions about it, or like I don't know, it's hard to explain, but I think you guys get what I'm saying when I say ke like sharing it too soon was probably not a good, was definitely not a good thing, because there were so many like houses that we kind of finalized. इधर हमारे यहाँ जहाँ इस वक्त हम रह रहे हैं इसके बहुत करीब एक घर था जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद था, एंड वी वर काइंड ऑफ लाइक आई हैड मेड सो मेनी प्लान्स. इस जगह को मैं ब्यूटी रूम बनाऊँगी, इस जगह को लाइक हम किचन को यूँ करेंगे. आई लव्ड द किचन इन दैट हाउस. लेकिन फिर एज सम ऑफ़ यू जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यू गाइस नो कि रमज़ान से थोड़ा सा पहले मेरे पेरेंट्स को दे वर कोविड पॉजिटिव, एंड सो बिकॉज़ ज़ाहिर है मेरा और मेरे हस्बैंड का तो घर लेने में या इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं है इससे पहले, सो ऑब्वियसली माई फादर हैड टू बी वेरी वेरी इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ इट. तो बिकॉज ही वॉज क्वारंटीन, तो like we were stuck, there was no progress for a while, and we were kind of in our hearts we had finalized that house. And फिर जब मेरे अम्मी अब्बू ठीक हो गए and they came to visit the house like with us, the house was already sold out. So there were so many times. उसके बाद एक और घर था जो even अभी 2 दिन पहले तक was an option, and I loved it. उसका भी किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था. For me like औरतों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी किचन में गुजरती है, so for me like the single most important thing was कि किचन कैसा है. एंड सो लाइक इस घर का भी मुझे किचन बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड इस वाले लाइक अगैन वी वर लाइक वी लव द हाउस, एंड हम बहुत ज़्यादा डिटर्मिन थे, लेकिन द सेलर वाज लाइक आस्किंग फॉर एन अनफेयरली हाई प्राइस. लाइक हमें जितना पसंद था वी वर रेडी टू ऑफर हायर देन मार्केट प्राइस, उसकी हम प्राइस ऑफर करने के लिए तैयार थे, बट ही वॉज नॉट रेडी टू सेल इट एट दैट प्राइस. मे बी उसको आइडिया हो गया था कि शायद हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट उसकी जो प्राइस थी वो अनफेयर हद तक हाई थी, एंड सो वी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट. और देन दिस वन वी वेंट वन डे एंड वी हैड लाइक द डील ready the next day, and it just lined up so perfectly with everything else that we had to arrange ke like it looked like a sign, and we finalized the house. आज हमने उसकी डाउन पेमेंट या बयाना जिसे कहते हैं वो करवा दिया है, and we should be ready to move in the next 4 or 5 weeks, which is extremely exciting. You guys have no idea how excited I am like about furnishing the house. एक एक चीज़ उसकी I've been like looking at all the different websites. पिछले like 10 दिन पहले तक मेरे जितने भी एड्स थे इंस्टाग्राम पे वो कस्टमाइज थे
to be like makeup products or baby products जो मेरे interest हैं, and now every single ad I see on Instagram is about like decoration pieces and stools and sofas and like all different kinds of things, घर से related जितनी भी चीज़ें हैं. Because you might disagree and you might call me a conspiracy theorist, but I do have a feeling कि ये जो Instagram और Facebook हैं, they spy on us and they listen to our conversations. लेकिन खैर I actively was looking for these kinds of things too, तो उस वजह से भी मुझे ये ऐड आ रहे हो सकते हैं. But anyways, एक बड़ी मज़े की चीज़ ये थी कि every time like I laughed about it so many times because हर घर में दाखिल होके like I said, one of the first things I would notice about the house is the kitchen. और kitchen के बाद जो मैं अगली चीज़ like I would notice or like consider was कि how would different parts of the house look if I'm filming there. एंड सो मैं हंस के अपने हस्बैंड को यही कहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर नहीं फिल्मिंग स्टूडियो ख़रीद रही हूँ, क्योंकि लाइक दैट वाज वन ऑफ द टॉप कंसर्न्स फॉर मी कि आई नीड टू मेक अ फिल्मिंग रूम देयर. एंड दैट इज़ वाई आई हैव इंडिकेटेड टाइम एंड टाइम अगेन कि मेरी लाइटिंग जो है वो कुछ चेंज हो रही है, कुछ चेंज हो जाएगी होपफुली इन द फ्यूचर. देयर इज़ नो वे आई कैन गेट लाइक डे लाइट, डायरेक्ट डे लाइट इन हेयर, but I'm gonna get some daylight in my new filming room and I'm so excited to share that journey with you guys. और मैं इसलिए like I was really कल मैं अपनी सिस्टर से पूछी थी क्योंकि कल घर फाइनलाइज हो गया था एंड बयाना आज हो गया, तो आई वाज लाइक शुड आई शेयर इट विद माई फॉलोअर्स एंड शी वाज लाइक आई थिंक यू शुड वेट अ लिटिल मोर. तो आई वाज लाइक कि चक्कर ये है कि आई रियली want to share this excitement right when I'm feeling it the most. And so that's when I was like, I'm going to make a series out of it. I'm going to start vlogging and I'm going to start vlogging today ताकि like you guys can feel my excitement as I'm feeling it right now. लेकिन उसके साथ साथ like there's going to be so much that can come into this series. और ज़ाहिर है मैं vlogging के साथ I'm terrible at it, तो there's a great chance कि बहुत सारी चीज़ें मैं उतनी डिटेल से कवर ना कर सकूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम फर्नीचर शॉपिंग और डूइंग अदर थिंग्स, स्पेशली अगर मैं अपनी बेटी के साथ फर्नीचर शॉपिंग करने जाती हूँ, विच आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि कोरोना भी है एंड एवरीथिंग, तो हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें. इफ़ आई गो विद माई मदर आई लीव हर विद माई हस्बैंड, एंड इफ़ आई गो विद माई हस्बैंड आई लीव हर विद माई मदर. लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न वन ऑफ देम इज़ नॉट अवेलेबल एंड हमारे पास वही दिन, whatever the case may be, अगर ईशान मेरे साथ होती है तो फिर obviously my hands would be too occupied to worry about vlogging. So जितना possible हो सके, and plus like I'm not comfortable pulling my camera out and start vlogging anywhere. आप लोगों को पता है I'm like very shy about it still. I'm very shy about filming around my house, even in front of my husband or my mother-in-law. So I'm gonna try my best. I'm gonna try my best to give you guys an empty house tour. I'm gonna try my best to like do a full like makeup studio, yeah, filming room setup kind of video, a transformation video. I'm gonna take you guys along with me for like window shopping online or like furniture shopping, what kind of ideas I have in my head for my house and all of that. उसके अलावा जनाब हमने घर बना बनाया ख़रीदा है, हमने घर बनवाया नहीं है. Some of you who know me personally और जो नहीं भी जानते, I've mentioned it a few times. My father has a construction company and so one of the questions I got the most जब मैंने अपनी personal life में लोगों के साथ share किया कि I'm looking for a house was कि तुम लोग बनवा क्यों नहीं लेते. And it was just like time kind of thing कि obviously घर मतलब प्लॉट लेके घर बनवाने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है. एंड लाइक आई सेड इट्स अनप्रडिक्टेबल, आवर फ्यूचर राइट नाउ इज़ अनप्रडिक्टेबल एंड वी वांटेड टू हैव लाइक अ हाउस रेडी. चाहे हमें लाइक 2 महीने बाद चाइना जाना पड़ता है, वी वांट टू लाइक हैव आवर बेस सेट. तो उसके लिए लाइक इवन दो टाइम फिर भी बहुत ज़्यादा लग गया एंड 4 महीने में घर बन जाते होते हैं, जितने लाइक स्पेशली हमने छोटा सा लेना था तो वो बन गया होता अब तक. लेकिन लाइक हर चीज़ में बेहतरी होती है एंड आई एम श्योर कि इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी. सो क्योंकि हमने घर बना बनाया लिया है तो इट्स नॉट परफेक्ट इन द सेंस इट्स ब्रांड न्यू, बट इट्स नॉट परफेक्ट इन द सेंस दैट 100% कोई भी चीज़ आपकी मर्ज़ी की तभी हो सकती है अगर आप घर खुद कंस्ट्रक्ट कराओ. तो देयर आर थिंग्स आई वुड चेंज अबाउट द हाउस. द गेट फॉर इंस्टेंस, जो हमारा मेन गेट है, आई डोंट लाइक इट. आई लाइक द एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन. जो गेट इट्सेल्फ, आई लाइक वेरी डिसेंट गेट्स और इस पे ज़रा फूल बूटे बने हुए हैं, सो आई एम नॉट ह्यूज फ़ैन ऑफ द गेट इट्सेल्फ.
Some wallpapers मेरे taste के नहीं हैं, and after a while, not right away, but after a while I might change those wallpapers. So there are little things about the house जो कि मुझे like जिस तरह कहते हैं खूब के पसंद आना उस तरह नहीं है, but that was the case with every single house. हमने dozens of house, जैसे मैंने कहा, इतने घर देखें, and there you're always going to, अगर आप ready-made house ले रहे हैं तो there's always going to be things you don't love about the house अगर आपने उसको खुद construct नहीं कराया तो. So that is something we learned the hard way कि आपको perfect चीज़, अपनी मर्ज़ी की चीज़, अपने taste की चीज़ नहीं मिलेगी. You'll have to compromise on that. But जो build है, it's apparently good. Like I said, my father is in construction, तो he went there. उन्होंने खुद अपनी आँखों से like he approved it for construction, तो इसलिए हमने लिया है. बाकी अब अंदर जो कुछ लगा हुआ है उसका क्या कह सकते हैं, only time will tell. बस आप लोग दुआ में याद रखें, आप लोग दुआ करें कि हमारे लिए घर हमारे हक़ में बहुत अच्छा साबित हो. आई एम सो एक्साइटेड, आई फील सो blessed to be able to sit here and share this news with you. It's huge for me, and I hope you guys are excited with me. I hope you guys are excited to come on this journey with me, even though like you have absolutely no idea right now. मैं आप लोगों को डेट बता देती हूँ. As I'm filming this, it's 2nd of June. So जब भी ये वीडियो अपलोड होगी, you guys would like know कि मैंने ये कितना अर्सा पहले फिल्म की थी. But anyways, मैं अब चलती हूँ जनाब. This is going to be the first installment in a series coming up on my channel, and I'm very excited to take you guys along with me for it. I wanted to share this excitement right here, right now. इसलिए मैंने आज ही बैठ के vlog शुरू कर दिया. If you have any questions, if you have any like video requests for this series, please leave them in the comment section down below. I would love to do them. I'm so excited. And yeah, that's it for today's episode. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.